Okay, guys, I hope that you have seen my previous video where I have explained everything about the installation and the downloading part. So let's move further with the MySql in detail. So let's start. So first thing which you should do is by typing MySql client search. See, line client will be open. You have to just click it. Okay, so I have told you in the previous video that your password is very important to remember because it will connect with you with the Python, right? Whenever you will connect with the MySql, it will first ask your password which you have set while installing. So please, it's very important to remember that password every time. If you haven't written it anywhere, then please do it right down because if you forgot this, then you will never connect to the MySql. Okay, so let's just type the password over here. Now you can see that it has been said that welcome to the MySql monitor. So now what you can do, let's just wait. Okay, so now the first query, you should be seeing the databases, right? अगर आपको सारे के सारे डेटाबेसेस देखने हैं तो विच क्वेरी यू विल बी राइटिंग, दैट इज शो डेटाबेसेस. अभी तक हमने कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया है. इट्स बाय डिफॉल्ट लाइक इन माय system there would be some databases which has been made by me because it's the earlier one I have installed previously also, so I don't remember I have made the database or not. But in your system, if you are new to this MySql, then definitely there will be no database installed or database created by you. It will be by default whichever is seen on your screen. Okay, so its query is show databases. It means कि जो भी databases आपके सिस्टम में है वो प्लीज मुझे दिखा दीजिए विद द सेमी कॉलम. रिमेंबर दिस थिंग, सेमी कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस. ओके, so let's just enter it. See, you can see that कौन कौन से databases अवेलेबल है मेरे सिस्टम में जो ये MySql उठा सकता है. That is the information schema, MySql performance schema, Sakila, STU is made by me, system and world. So let's see. Okay, let's suppose I didn't know what is in this databases. I have to create my own database. So what you can do is you can type the query over here. Sorry, create database. Let's say you want to add the database emp. So you will write emp over here. So what they said, query okay, one row affected means the changes has been done. Okay, so let's move further. Now you wanna use it. So guys, एक बात please remember रखना, अगर जब तक आप डेटाबेस को कोई यूज नहीं करोगे तब तक आप डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती हमेशा करते हैं. वो बोलते हैं मैम हमने क्रिएट कर दिया डेटाबेस हो गया, बट लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि हमें जब हमने क्रिएट टेबल करने की कोशिश की उस डेटाबेस में तो एडिशन हुई नहीं और वो एरर थ्रो करा. दैट विल गिव द फैटल एरर. ओके, सो व्हाई दिस इज बिकॉज आप लोग डेटाबेस को यूज ही नहीं कर रहे, उसको पता ही नहीं कौन सा डेटाबेस यूज करना है. राइट इतने सारे डेटाबेसेस है, किसमें टेबल क्रिएट करना उसको ये पता ही नहीं. तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट फर्स्ट क्रिएट और यू विल टेल द MySql command line prompt that please use the database emp. So what you will write, use database emp and semicolon. Okay, sorry, not you don't have to write database, you just write use emp. So what that is saying, database changed. Okay, so database changed means अब हम उसके अंदर क्वेरीज अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके अंदर हमने कोई भी टेबल क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, वी कैन डू दैट वेरी इजीली. ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, अब ये टेबल क्रिएट करेगा. अब आपको पता होगा कोई भी डेटा है
डेटाबेस में किस में लाइक किस में फॉर्म होता है, रोज एंड कॉलम्स में, डेफिनेटली, राइट. सो अब हमने रोज एंड कॉलम्स में डेटा भरना है, तो दैट विल बी इन अ टेबल फॉर्मेट, राइट. डेटाबेस का जस्ट नेम है, डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, रोज एंड कॉलम्स में डेटा है. सो व्हाट वी विल राइट, वी विल फर्स्ट क्रिएट द टेबल. Table name, you can do anything. I am just giving it student. Okay. Create table. This is just like a simple English, you can say. Okay. Create table student. Okay. Then what you have to give is ID, the variable. Like I want to, first column should be of ID. Okay. Their data type is int. So you will be writing here int, comma, you have, then you want name of column, then that would be data type will be varchar, and you have to just pass over here what is 20 over here. 20 is basically telling you the length of the name, the maximum length should be 20. Okay. So next thing is you want to have the department. Yeah, department, that will be in varchar, that again would be 20. Next would be marks. Marks will be, of course, it can be in the float, so give it a float only. Don't forget to close it with the next bracket also. So give the semicolon, and your query has been created for the creation of the table. So let's start. Okay. So query okay, 0 rows affected, कुछ भी नहीं हुआ, but एक table generate हो चुका है. If you want to see the table, you can't see the table, but you can see, I'll tell you what I am doing right now afterwards. Just see what I am doing. Okay, so what I have done here. अब आपको क्या करना है, आपका एक टेबल क्रिएट हो चुका है, आपने देखना है कुछ भी है उसमें, प्लीज मुझे शो कर दो, कुछ भी है. तो मैंने क्या क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मीन्स कि कुछ, सिलेक्ट मीन्स चीजें सिलेक्ट करो, स्टार मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, whatever it, there is name, there is ID, there is department, there is mark, everything show me from कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, which we have created just now. Okay, this one. अब इसने empty set क्यों बोला, why is this empty? Just because you can say कुछ भी हमने अभी तक इंसर्ट नहीं किया, कुछ भी इंसर्ट हमने वैल्यूज नहीं किया अभी तक, तो ये क्या बोल रहा है आपको, empty बोल रहा है. So let's see the second one. First, now we will be inserting some values. I will just explain you within a minute. Insert into student values. अब ये क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है किसको, वैल्यूज को, किसमें, स्टूडेंट में, स्टूडेंट टेबल में. You have to pass the table name also. Insert into किसमें, स्टूडेंट नेम्स में. क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज. वैल्यूज क्या, फर्स्ट वैल्यू क्या हम देंगे, ID. ID कैन बी इन इंटीजर 100. सेकेंड नेम, इट कैन बी Tanisha. Next is department, it can be CSC. Marks, it can be 97. Okay, just pass it. Okay, one thing more, I forgot to have the quotations. Don't forget to do that because it's a string. Okay, so yeah, now it's all right. Give the semicolon. And what they said, query okay, one row affected. क्या means कुछ चीजें affect हुई हैं, कुछ row add हुई है, one row added. Affected means it's been added. Okay, so now see, select. अब देखते हैं हम सारा कुछ उसमें क्या क्या है student table से. See, now you can see the table has been generated. This is the headers which we have given to create the table. ID, name, department, and marks. The values are being inserted like 100, Tanisha, CSC, and the marks. Okay, one row. Likewise, this we can add multiple rows. I am just copying it. Okay,
So just I'm changing the values over here. It can be done. CSC also. It can be 26. Okay. So now this has been inserted. Now let's again change the value. Now changing the marks. Okay, let's change the department this time. And same way, the marks. Okay. This has been done again. Next, I will just write 4 to 5 queries because, it will be easy for me to analyze the data. Let it be ECE this time. Let's see. Okay. So next again, 104, and this time I am just giving this. It can be mechanical this time. Oh, sorry. Okay. So now let's do it again. Select star from students. Okay, student table. Write it very carefully. Okay. So now you can see all the rows, whichever I have inserted, right? So this is the table created now. Now we will play with the data now. Okay. We have been created the table so far. Now we will be playing with the data. We will be, selecting only a specific names. जैसे हमें सिर्फ name और marks चाहिए कुछ बच्चों का जिसके 75 से above marks है ना. कभी कभी होता है जब whenever teacher enters into your class and just say to you that to the whole class, those students who have marks greater than 75, they just give your names, right? Just like that, we will ask the computer. We will give the query to the computer. Okay, you have this table and you have to just give me or output me the names or marks whose students' marks are greater than 75. Okay, so let's do it. देखते हैं कैसे होता है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पूरे टेबल में से कितने कॉलम्स है आपके पास आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट एंड मार्क्स है, राइट? तो आपको सिर्फ नेम और आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, बिकॉज आईडी विल बी यूनिक, राइट? आईडी इज अ प्राइमरी की, so it will be unique for each and every student, right? So हमने क्या करना है, नेम और डिपार्टमेंट चाहिए हमें सिर्फ पूरे टेबल में से. हमें ये आईडी नहीं चाहिए, हमें ये मार्क्स नहीं चाहिए. We don't need these two things. Okay, so what we will do, which query we will be writing? Select name, marks from student. So can you see? Only 2 columns have been printed on the screen, that is of the name and the marks. अगर आपको फालतू कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 2 चीजें पर काम करना है, तो आप क्या करोगे? ये क्वेरी लिखो. Instead of writing star over here, you are giving the particular column names which you want to play with. Okay. So now अगर आपको चाहिए वैसे ही जो मैंने पहले बोला था कि 75 से ऊपर अगर जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, you want those data only, those columns, those rows only, that will be like this. Okay, I'm writing the query. Select, again you want only name and marks from, कहाँ से चाहिए, कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से. Where is the keyword which you have to use? जहां, अब ध्यान से इस क्वेरी को समझो. पहले सिलेक्ट कर दो नेम और मार्क्स किससे? स्टूडेंट टेबल से. जहां, वेयर, जिसके क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन है 75 से. Is that clear with you all? If you have been understood all these concepts right now, till now, then please comment in the comment box that yes, you have understood. It will be really appreciate for me. So now marks greater than 75. Now you can see that Tanisha got 97, Girish got 77, Isha got 87, right?
So, which row is being left? Tanu, right? It's she. Okay, her marks is 69, so that's why. And Tan also, because her marks is 26, so it has been left over. Only those students' marks has been come up on the screen whose marks is greater than 75. Okay, is that clear with you all till this? Okay, let's play further. Let's play with the data mode and you will be getting understood. Okay guys, now अब हमें क्या करना है? ठीक है, मार्क्स तो हमें 75 से ऊपर मिल गए. अब हमें चाहिए कि हमें सिर्फ वो दिखाओ बच्चे, सिर्फ सीएससी डिपार्टमेंट से बच्चे हों जिनके मार्क्स 75 से अबव है. ठीक है, वो भी कर लेते हैं. सिलेक्ट नेम मार्क्स and we will be writing department also because we want the department, we want to see कि सारे CSC से ही आ रहे हैं या फिर किसी और से भी आ रहे हैं. So it will double check the thing. From कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से. Where department is CSC. CSC would be in quotation and marks is greater than 75. Okay. तो किसके ज्यादा आए हैं? जो सीएससी से भी है और जिसके मार्क्स 75 से ज्यादा. दैट इज ऑफ only one person, name is Tanisha, marks is 97 and department is CSC. Okay, so next thing क्या कर सकते हैं हम? और ऐसे कर सकते हैं कि सीएससी का भी चाहिए और इट कैन बी मैकेनिकल ऑल्सो. कोई बात नहीं, मैकेनिकल और सीएससी के दोनों के चाहिए. हमने देखना है कि जिसके मार्क्स 75 से ज्यादा है, बट सीएससी और मैकेनिकल दोनों के दिखा दो मुझे. ठीक है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट in CSC मैकेनिकल. ओके, सो पता लग गया. अगर आपने दो डिपार्टमेंट्स को कंबाइन करके दिखाना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? वेयर डिपार्टमेंट इन, जिसमें डिपार्टमेंट क्या हो, सीएससी और मैकेनिकल हो, वो मुझे नेम डिपार्टमेंट्स और मार्क्स वो शो कर दो. राइट, यहां तक क्लियर हो गया है? तो प्लीज लाइक दिस वीडियो. ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू गाइज. कुछ भी नहीं समझ आया, डू लेट मी नो. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके प्लीज. ओके, सो एक क्वेरी जाते जाते एक और देख लेते हैं. अगर आपको चाहिए कि आपके पूरे डेटा में से, मुझे नहीं पता, कुछ नेम कुछ समथिंग बोल रहे थे टीचर, आई डोंट नो, sorry, the principal was saying this person name was there on that application, मुझे इसके डिटेल्स चाहिए. तो आपको नहीं पता वो उन्होंने क्या बोला था? शी वाज आल्सो नॉट श्योर, राइट? सो जैसे समथिंग लाइक सोहन बोला, ग्रोहन बोला, मोहन बोला. आई मीन दे डोंट नो about the person's name exactly. Okay, so they're just getting they just doing the कि चलो देखते हैं, हो ही जाएगा. कोई तो होएगा पर्सन नेम. सॉरी, तो ये अभी मेरी let's just see, select name department marks from student where name, like हमने यूज करना है. लाइक इज जस्ट लाइक
कि मेरा बता दो कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो दिस थिंग, बट जस्ट देख लो अभी तक। तो ये आ गए जिसमें ए है, ए बीच में भी है, ए साइड एग्जैक्ट एंड में भी है। जिसमें ए कुछ कुछ है, मुझे याद था उसका आ कुछ था बीच में, ए बोला था, तो उन्होंने सारे बच्चों के नेम्स वो दिखा दिए। ओके, so please like my video if you like it. Do subscribe at my channel. Please support me, guys. I need really your support. I will be making this kind of videos more. If you like it, do give me a suggestion also which topic I should cover up or which should I leave it. So please let me know if you have any queries. Thank you so much.